Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rawal. Today's date 9th January 2021. Standard 10, subject Science. Um, we already noticed in Standard 10th, you have completed chapter number 3, 4, and 8 to 14. Okay, you submitted your classwork in 10 January 2021. So, in this video, we have completed chapter number 8. Most probably we have completed chapter number 8, and also we have started the chapter number 9. So students, you write your classwork in neat and clean writing, okay, and submitted your classwork, okay. ભગવાન બહુ અવાજ કરે છે. Okay, now in standard 10th group, we send a government paper, subject maths and essays. Okay, so you also write down the paper, and send me in hard copy in 13 January 2021. Okay, this marks will be included in your internal also. Okay, so all students write paper in supplementary. Okay, now we start chapter number 8. How do organisms reproduce? Topics in this chapter. First of all, we studied the introductions. So types of reproductions, sexual reproductions and sexual reproductions. Then modes of sexual reproductions like fission, fragmentations, regenerations, budding, vegetative propagations, artificial method of vegetative propagations, and benefits of tissue culture. In the sexual reproductions, we have studied the sexual reproduction in plants, types of flowers, structures of flowers, process of seed germinations, reproduction in human beings, changes at puberty in male and female. Okay, then male reproductive systems, उसमें जो included points are there: testis and its functions, vas deferens, urethra, associated glands. Okay, same way in female reproductive systems, we have studied the ovary, oviduct or fallopian tube, uterus, then fertilizations of egg, when egg is fertilized, when egg is not fertilized. Then next topic is reproductive health. Topic included in this are that sexual transmitted diseases, methods of contraception, and female foticides. Okay, so let's start. Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures continuity of life on Earth. Nucleus of the cell contains DNA. The full form of DNA is deoxyribosome nucleus. Okay, deoxyribose nucleic acid. This is the full form of DNA. Okay, which is the heredity material. डीएनए जो है, ओके, जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स को है वो हेरिडिटी जो है वो डीएनए जो जीन से है ना वो ट्रांसफर हो जाता है. डीएनए replicates and forms few cells causing variations. So these new cells will be similar but may not be identical to original cell. Variations are useful for the survival of the individuals and species over time as well as basis for evolutions. Here types of reproductions: asexual reproductions. A single individuals give rise to new individuals. Gametes are not formed. New individual is identical to parent. It is extremely useful as a means of rapid multiplications adopted by lower organisms. Then sexual reproductions.
Two individuals, that is, one male and one female, are needed to give rise to new individuals. Gametes are formed. New individuals is genetically similar but not identical to parents. It is useful to generate more variation in species adopted by higher organisms. Then modes of asexual reproductions. Okay, here the topic included that the modes of asexual reproductions, like in plant. Here we describe the examples of amoeba. Okay, which type of reproductions in amoeba. So we study in this topic. So fission. The parent cell divides into daughter cell. First of all, binary fissions. Two cells are formed. Example, amoeba. This is the diagram of binary fission in amoeba. Then multiple fissions. Many cells are formed. Example, plasmodium. Plasmodium is the mosquitoes. Plasmodium is the mosquitoes that causes in disease malaria. Okay. उसमें जो होता है वो मल्टीपल फिजन होता है. मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. Then fragmentations. The organism breaks up into smaller pieces upon maturations. Each piece develops into new individuals. Example, Spirogyra. This is the diagram of Spirogyra. Then regenerations. Okay, you have draw the diagram in your classwork. Okay. Then regenerations. If organisms is somehow cut or broken into many pieces, each piece grows into a complete organism. Example, planaria and hydra. This is the diagram of planaria, regenerations in planaria. Then budding. A bud is formed which develops into tiny individuals. It detaches from parent body upon maturations and develops into new individuals. Example, hydra. This is the vegetative propagations in hydra, budding in hydra. In many plants, new plants develops from vegetative parts such as by roots. Example, the dahlias, sweet and potato. By stem, example, potato and ginger. By leaves, example, bryophyllum. Leaf notches bear buds which developed into plants. This is a bryophyllum. Then artificial methods in vegetative propagations. फर्स्ट है जो है वो ग्राफ्टिंग है. यहाँ पे लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स. हियर द डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइलम. So artificial methods, vegetative propagations. First, grafting. Example, mango. Okay. Second, cutting. So example, rose. रोज़ में हम कट करके जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस उसमें हो सकता है. देन थर्ड, लेयरिंग. एग्जाम्पल, जैस्मिन. एंड फोर्थ है टिश्यू कल्चर्स. न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट. These growing cells are kept in a culture medium leads to the formation of coleus. Cellulose is then transferred to hormone medium which causes growth and differentiations. Example, ornamental plants and orchid. Then benefits of tissue cultures. क्या benefits है tissue culture में? So we can grow plant like banana, rose, jasmine, etc. that have lost the capacity to produce seeds. New plants are generally similar to parents. Helps in growing seedless fruits. So this is the benefits of tissue cultures. Okay. Fifth number जो है वो spore formations. What is spore formations? Spores are small
Spore formation. Spores are small bulb-like structures which are covered by thick walls. Under favorable conditions, they germinate and produce new organisms. Example, rhizopus. Here the spore formation is rhizopus. Okay, this is the diagram of spore formation. राइजोबियम में जो है वो स्पॉर फॉर्मेशन जो है वो ऐसे होता है. ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. व्हेन रिप्रोडक्शंस टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट of the fusions of male and female gametes is called sexual reproduction. Fusion of gametes is called fertilization, which results in variations. Fusion में जो है वो variations होता है. Okay, so sexual reproduction in plants. ये जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखा, ओके, ऊपर जो देखा वो अलग अलग वेरिएशंस होता है. ओके, प्लांट्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स. अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन whorls, namely sepals, petals, stamen and pistils. Okay, these are the 4 reproductive parts in flowers. Okay, ये फ्लावर के जो है वो रिप्रोडक्टिव प्लांट है. सिपल्स है, पीटल्स है, स्टेमेंस है एंड पिस्टिल्स है. ओके, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है. नाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट. ओके, both male and female reproductive parts are present. Example, hibiscus and mustard. This is the bisexual flower. Then unisexual flower. So either male or female reproductive part is present. Example, papaya and watermelon. Okay. दिस इज़ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. आप देख सकते हो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उसमें क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट. दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट. तो वो तो जो है वो हिबिस्कस में है और दूसरा जो है वो मस्टर्ड सीड्स में होता है ना. मस्टर्ड सीड्स हम खाते हैं ना, यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल ना वो सब. अभी यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स है, ओके, वो पपैया एंड वाटरमेलन. Only female reproductive part is present. Structures of flower. This is the longitudinal sections of flowers. longitudinal कट किया है. तो सबसे पहले देखो आप, उसमें सबसे ऊपर एंथर, देन फिलामेंट, नीचे पीटल, सिपल, ओवरी. ये जो पूरा पार्ट है वो पिस्टिल का है ना. आप देख सकते हो स्टिग्मा. हियर द पिस्टिल, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी. Sepal, petal, filament and anther. Filament and anther are included in stamen. Then stigma, style and ovary are included in pistil. Okay, this is the longitudinal parts. Process of seed formation. Pollen grains produced in the anther are transferred to the stigma of same flower. Here the self-pollination or stigma of another flower. This is the cross-pollination through agents like air, water or animals. Pollen grains germinate and form pollen tubes which pass through style to reach up to the ovules present in ovary. जिसमें pollen grains जो है वो होते हैं. The fusion of male and female gametes is called fertilization. Zygote is produced inside the ovary. Zygote जो है वो उसमें जो है ovary में, inside the ovary वो जो है वो produce करता है zygote. Okay, the fusion of male and female gametes is called fertilization. Zygote is produced inside the ovary. Zygote divides to form embryo. Ovule develops thick coat and changes into silk gradually. Ovary changes into fruit and other parts of flower follow. Ovary कर देती है. The seed germinates to form a plant under suitable conditions
such as air, moisture, etc. Here the reproduction in human beings. This is the germinations. Then sexual maturations, the period of life when production of germ cell, that is ova जो फीमेल में है and sperm जो मेल में है, start in the body. This period of sexual maturations is called puberty, जिसको हम puberty कहते हैं. Then changes at puberty, कॉमन इन मेल एंड फीमेल. क्या चेंजेस होता है? तो कॉमन क्या है मेल एंड फीमेल में? तो थिक हेयर, ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनेटिकल एरिया, वहाँ थिक हेयर जो है वो आते हैं. देन स्किन बिकम्स ऑयली, में रिजल्ट इन पिंपल्स. स्किन ऑयली हो जाती है बोथ मेल एंड फीमेल में, और पिंपल्स भी हो जाते हैं. इन गर्ल्स में अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? तो ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज. गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होती है. गर्ल्स बिगिन टू menstruate, वो पीरियड्स में होती है. इन बॉयज़ की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस के ऊपर थिक हेयर आते हैं. वॉइस बिगन टू क्रैक, उनका जो वॉइस है वो क्रैकिंग करने लगता है ना, आवाज़ थोड़ी मोटी होती है. दिस चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस. इससे हमें क्या पता चलता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है. देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, तो उसमें फर्स्ट है टेस्टिस. अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रॉटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. स्क्रॉटम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. वो स्पर्म्स के प्रोडक्शंस के लिए जो है वो ज़रूरी है ना. मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर. टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो है उसमें जो है वो रिलीज होते हैं. देन फंक्शन ऑफ टेस्ट, क्या फंक्शन ऑफ टेस्टिस है? तो रेगुलेट प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म्स, ब्रिंग चेंजेस एट puberty. सेकेंड जो है वास्ट डिफरेंसेस, इट passes sperm from testis up to urethra. थर्ड यूरेथ्रा, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ sperms and urine. इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पैनिस, जो उसको हम पैनिस कहते हैं. देन फोर्थ है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रेशंस टू द स्पर्म्स. दिस फ्यूल प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी. वो ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाता है. ओके. स्पर्म along with secretions of glands form semen. Here the diagram of human male reproductive systems. ओके, आप देख सकते हो. सेमिनल वेट्स है, बता देती हूँ मैं. दिस इज अ सेमिनल वेसिकल, ब्लेडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस एंड यूरेथ्रा. Here the ureter. This is the vast differences. This is the testis and scrotum. Okay. First ovary. A pair of ovaries located in both sides of abdomen. Female germ cells, that is eggs, are produced here. At the time of birth of a girl, thousands of immature eggs are present in the ovary. At the onset of puberty, some of the eggs start maturing. Eggs mature होना start कर देते हैं. An egg is produced every month by one of the ovaries. Every month जो है वो egg जो है वो produce होता है ना. तो जो गर्ल्स है वो पीरियड्स में होना स्टार्ट कर देती है. सेकेंड है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. दिस इज द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस. फर्टिलाइजेशंस, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, टेक प्लेस हियर. थर्ड है यूटेरस. इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. यूटेरस ओपन इनटू वेजिना थ्रू अ स्क्रेविस, वहाँ से वो ओपन होता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी, दिस आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, यूरेटर, क्रेविक्स, वेजिना. ओके, याद रखने एग्जाम में आते हैं. Then fertilization of egg. When egg is fertilized, the fertilized egg called zygote is planted in uterus and develops into an embryo. The embryo gets the nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called a placenta.
It provides the large surface area for the exchange of glucose, oxygen and waste material. The time period from the fertilizations up to the birth of the baby is called the gestation period. It is about 9 months. 9th month वो होता है ना when egg is not fertilized. The uterus prepares itself every month to receive fertilized egg. एग फर्टिलाइजर नहीं होता है तो क्या होता है ना, फर्टिलाइज होता है तो ये जो है वो हमने देख लिया। यहाँ तक हम ये वीडियो में दिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।